Samaveta Bhakta. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Shishi Guru and Shishi Gauranga. Srila Prabhupada की जय. हरे कृष्ण. आगे आ जाइए प्रभु. सभी भक्तों का स्वागत है इस साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में. रिमोट दे दीजिए प्रभु ऑफिस. कोई किसी को कम ज्यादा चाहिए तो इट्स देयर ऑन द मिडिल. चलता है. फिर भी आज संकीर्तन हो गया बहुत दिनों बाद में. यस 24 है. इसको थोड़ा बढ़ा दो. या इट्स ओके. एसी सब लोगों को ओके. अभी तो ठीक है. ठीक है. अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 18. पहले हम लोग याद कर लेते भगवान को. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. गोविंदाय नमो नमः. गोविंदाय नमो नमः. हरे कृष्ण. अध्याय 2 भगवद गीता का सार और श्लोक क्रमांक 18. मेरे पीछे दोहराइए. अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत. अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत. प्रभु जी और माता जी. अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत. अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत. अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत. अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत. अंतवंत इमे देहा नित्ययुक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य
तस्मात् युध्यस्व भारत अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत अंतवंत इमे देहा अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणा नित्यस्योक्ता शरीरिणा नासिन अप्रमेयस्य अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत तस्मात् युध्यस्व भारत अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। हरे कृष्ण। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अंतवंत नाशवान इमे ये सब देहा भौतिक शरीर नित्यस्य नित्य रूप नित्य स्वरूप उक्ता कहे जाते हैं शरीरिण देहधारी जीव का अनाशिन कभी नाश न होने वाला अप्रमेयस्य न मापा जा सकने योग्य तस्मात् अथ युध्यस्व युद्ध करो भारत हे भरतवंशी। अनुवाद तात्पर्य इसी वक्त वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे बोला है अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। पढ़िए प्रभु तात्पर्य। यस प्रभु कोई भी। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है तथा तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, तथा धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर चढ़ने लगता है, तथा आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शरीर शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो second adhyay 18th shlok. So we are discussing on the analytical study of the body and soul. The topic going on is analytical study of the body and soul, right? So Krishna is dismantling the reason given by Arjuna, which was compassion. So we are in that right now. So we have completed in the second chapter 17 shlokas, and this is the 18th shlok. So last shloka, what is a recap? Can you recollect some of the points? That's usual ideal. Because when we go to the current class, it is always a continuation of the last shloka, right? Or it would be a continuation of last 3-4 shlokas. But then we recollect last shloka. What is it? We understand the nature of the soul. Okay. How it like spread and all over the bodies and activate the bodies through the 5 senses. And we also discuss the size of the soul. And Okay. upper part of the head. Yeah. So fine. So consciousness, we discussed like how the soul is present throughout the body by way of consciousness. Okay, consciousness is the important word. अपनी संस्था का नाम इसलिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है. सो चेतना हमारी सारे शरीर में व्याप्त है और ये सोल की वजह से है. यदि ये सोल निकल जाए तो चेतना भी चली जाए. सो चेतना विहीन शरीर मृत शरीर के समान है. ठीक है. सो सारे शरीर में चेतना व्याप्त है, बॉडी में कॉन्शियसनेस. So if the consciousness, there is no consciousness means it's a dead body. And when there is no consciousness, when the soul is not present within your body. And dusra, when the soul is present and the consciousness is present throughout the body, people may get a doubt what is the size of the soul. And that is why Srila Prabhupada made it clear, giving Shastra's references. That's what Prabhu was saying, that the size of the soul is 1/10,000th part of the tip of the hair. The front portion of the hair, when it is broken to 10,000 parts, एक का 100 और 100 का 100, तो इस प्रकार बताया गया. तो उसका 10,000 part of this, one part of the 10,000 part is the size of the soul, right? और size of the super soul भी मैंने बोला था. खैर ठीक है, उसके बाद और points here. हम लोग ने ये भी आपने बताया कि the scientist, material scientist, और इसमें क्या मतलब they accept कि क्या बोलते हैं हृदय में ये होता है, लेकिन power house. they don't accept the क्या बोलते हैं presence of soul. Yes. डिफरेंस के बारे में हम लोग Yes. Scientifically and Vedic study wise. So, and Vedic scientific studies, scientists conclude, even doctors conclude that, something is there in the heart area through which the entire consciousness comes through. The energy comes into the body. So it's a powerhouse, is the heart. They believe that, but they do not know the presence of soul because they cannot find it. It is 1/10,000th part of the hair, so they don't find it and they don't conclude. But the presence of soul is already concluded by whom? Yeah, Shastra, Sadhu, and Yes. Tattvadarshi bhi. Yes, uske pehle wala shlok. So Tattvadarshi bhi. So Tattvadarshi bhi have already analyzed the body and soul differences and given you. Okay, what else? 5 types of hair. Yes. Where does the soul stay?
Yeah, it is swinging between the 5 types of air in the heart region. So what are those 5 types of airs? Prana, Apana, Samana, Vyana and Udana. So ये 5 प्रकार के एयर है, और भी 5 प्रकार के याद नहीं होंगे अभी तो कभी और बनेंगे, हैं? मैंने 10 टाइप की एयर बोली थी। हाँ हाँ, ओके, माता जी ने नोट्स लिख लिया इसीलिए देवदत्ता, यस, ठीक है, दैट वी विल कम टू नो व्हेन वी विल कम इन द 6th chapter. Right now we don't deal with it because it is set 5, so we describe 5 mostly. We describe what are the 5 parts of airs. So pran is up to the lung region, right? Yeah. So वैसे all 5 types of airs we defined. Any other doubt? किसी का कोई? नहीं ना? ठीक है. What else? Any other point? Different energies of Lord. Yeah, different energies of Lord, because, and what are the types of energies? Apara. There are 2 main energies, para and apara. And para energy is again divided into 2 parts, and that is no. Antaranga and Tatastha. Tatastha. And that apara Shakti is called Bahiranga. Okay. So that is para Shakti is defined into 2 parts. That is Antaranga, that is Swa Shakti, internal energy of the Lord, and Tatas, marginal potency, that is Tatastha Shakti, which is given to the Jivas. Okay. The Akshara and Akshara Jivas. And the Apara Shakti, that is the Apara Shakti is called as Bahiranga Shakti. Okay. And the self energy of the Lord is again divided into Satchit and Anand. Okay. We'll discuss it someday else. That's what I said. Yeah. Okay. This is the main energy. So among which we are in the Tatastha Shakti. Jeev is in the Tatastha Shakti, and the Lord himself is in the Swama, that is internal potency. Okay. The self potency, internal potency. Or we call it as Parashakti. Potency means energy. Shakti. Okay. हाँ, पावर रहता है ना, एक इसका संस्कृत मीनिंग है मींस पावर, आपकी एनर्जी मींस लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, आप क्या बोलते हो उसको? ऊर्जा, उसको एनर्जी को ऊर्जा। हाँ, ठीक है। और कोई पॉइंट्स याद आ रहे हैं? योग के बारे में भी आप हाँ, yes, we have to, so this upper, so soul is what? Soul is the marginal potency, and it is within this body, okay, which is made up of 5 different elements, right? So because we are in the contaminated state, this body consciousness needs to be revived so that it comes to the soul consciousness level. And that is where, through the taking of this 5 types of airs, it actually helps in reviving the consciousness to the original consciousness. And that is why that meditation and all those is prescribed. And Srila Prabhupada spoke about Hatha Yoga, that is meditations. So what meditation we do? We do Kirtan meditation. Hare Krishna meditation. Right now what we were doing, that is Kirtan meditation. one of the points you mentioned that it should not be used for material gain. Yeah, that is very much important. Yes. Hare Krishna Mahamantra can never be recited for material profits. It is only for the purpose of cleansing the soul. We should never gain by मेरे से ये गलती हो गई इसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र करना, नहीं, it is one of the अपराध. हम लोग इस्कॉन में सवेरे रोज 10 अपराध पढ़ते हैं. तो one of the अपराध is thinking, chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities offered in the Vedas as fruitive activities or karma kanda. So we cannot chant Hare Krishna just for the purpose of karma kanda. Okay, I have done something, so I have to repent for that. Chanting is not required. Chanting is required for the purification of our body and bringing it to the soul consciousness level. And soul is right now covered with this senses. Anarthas of the senses. That is the reason we have forgotten our relationship with the Supreme Lord. So that we will get over period, you will get more clarity. But that was given as a glimpse. Okay. Yeah, that was very much important point. और कुछ याद आ रहा है किसी को? With the super soul. Yes, that was also just given as a glimpse by Srila Prabhupada in the translation purports, right? Soul is not alone, it resides along with the super soul. Huh?
और ये अभी आगे ही जाके अगले 2-3 श्लोक बाद में आपको क्लियर हो जाएगा, 2 या तीसरे श्लोक में आपको ये क्लियर हो जाएगा दैट सोल इज नॉट अलोन इन योर बॉडी, द सोल इज सिटिंग अलोंग विद द सुपर सोल, and all the Vedas have also confirmed this. So presence of two souls in the body, that is the super soul, which is nothing but Paramatma in the form of Kshirodakshay Vishnu, and the soul, which is also his part and parcel. Both are there. One is enjoying fruits. So what functions both are doing, we'll come to that in the next shloka. Okay, means after 1 or 2 shlokas. Because then 2 shlokas are mentioned, then suddenly when the 2 shlokas come, what functions they do, we'll describe that. Okay? Yeah. What else? I think so we have covered almost all points. Also about the elements. 24 elements. 24 elements was before that, but he reiterated that. This is इसका reiteration था पिछले वाले श्लोक में उन्होंने 2 वर्ड यूज किए थे ना, अविनाशी और अव्यय. अविनाशी और अव्यय वॉज यूज्ड लास्ट, और ये दोनों का अर्थ एक ही है. तो पर्यायवाची हमने बोला था ना, लाइक सिनोनिम. तो सिनोनिम क्यों यूज किया जाता है? जस्ट टू thrust upon the matter, like to give clarity on the matter. So what matter we are discussing? Body and soul. That is the reason we said, when we read in totality, we come to know the previous shloka which was saying that it was belonging to eternity and all those which has been said is said in connection with body and soul. ये जो 16वें श्लोक में जो हमारा डिस्क्रिप्शन था वो बॉडी और सोल के बेसिस के ऊपर है. ठीक है, नाउ अब हम करंट श्लोक पे आते हैं. यस प्रभु. सो अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत. तो लास्ट श्लोक कृष्णा डिस्क्राइब्ड अबाउट द सोल, राइट? The qualities of the soul, and it was being description. So today it starts with antavanta ime deha. Ime deha. Okay, ime deha means these bodies. ये सभी जो आपके सामने खड़े हैं शरीर स्वरूप, है ना, ये सारे बॉडीज अंतवंत. अंतवंत मीन्स नाशवान है, will be destroyed. These are made or designed or destined to be destroyed. Okay, these bodies have been designed to be destroyed, all these bodies. Okay, nityasyoktha sharirina. So he says specifically, he says antavanta ime deha, and he comes back again to nityasyoktha sharirina. But nitya is whom? Opposite of nashwan is what? Nitya, right? Opposite of antavanta is nitya. Antavanta is destroyable, and nityas is non-destroyable, eternal, again what you call it as, तो ये जो नित्य eternal स्वरूप है इसका अंत नहीं होता, not destroyable. नित्य स्योक्ता शरीरिणा. शरीरिणा means the possessor of the body, देही, उसका एक और वर्ड है शरीरिणा. तो ये शरीरिणा नित्य स्योक्ता है. नित्य अपने शरीर में है, it is not destroyable. And he doesn't stop there. He goes ahead in the next slide and says, Anashino aprameyasya tasmat yuddhyasva bharata. Anashino means, again, the meaning is imperishable. Anashino ka matlab again, imperishable, indestructible. Okay? And aprameyasya, immeasurable. Immeasurable. Tasmat yuddhyasva bharata. Utho Arjuna, yuddha karo. Bharata is again Arjuna. He is referring to Arjuna. Come on, get up, Arjuna, and start fighting. So till now, Krishna is directly telling Arjuna, now, please get up and do your duty. Till now, we were only inferring, right? Krishna is saying first time for Arjuna. Please get up and fight. Before this, Uttishta was the word used, but that was not indirectly. You get up, he was. But he is saying directly, fight here. So he is using the word first time. Get up and fight, Arjuna. Okay. So, and Bharata is Arjuna, right? How Bharata is Arjuna? Because Bharatvanshi, na? This was used before also, Bharata. 2.10 only it was used. For whom it was used? No, you check. check. Dhritarashtra, yeah. Prahasanniva Bharata. Sanjay says, yeah, Krishna smiled
Oh Bharata, that was he was saying it to Dhritarashtra. Okay. So Prahasannyo Bharata. So it was used that time also. So for both of them, same words are used, right? For even for Dhritarashtra as well as Arjuna. Why? Because they belong to that same family. Okay. Where Dhritarashtra was differentiating in the first shloka, if you all remember. He was differentiating my sons and Pandu's sons. And whereas Bharata represented they both belong to the same family. So there should not have been a differentiation कि भाई मेरे बच्चे मेरे भाई के बच्चे. So कभी कभी एक ही वर्ड दो लोगों को यूज किया जाता है, कभी कभी एक ही वर्ड दो दो मीनिंग कन्वे करने के लिए यूज किया जाता है, या दो से ज्यादा मीनिंग कन्वे करने के लिए लिया जाता है ना. लास्ट टाइम ऑल्सो वी सो द सेम टू वर्ड यूज फॉर द सेम काइंड ऑफ मीनिंग. So this is beauty of Sanskrit, and this is also a beauty which gives confusion among many. By using, like there it was said to Dhritarashtra, here it is said to this, sometimes it's a confusion to people. So कभी कभी हमको गीता में विरोधाभास मिलता है. Okay, विरोधाभास in the sense कि हमको लगता है ये जो बोला है बात ये मेल नहीं खाता है, जो पहले कहीं बात कही गई है और कहीं बात कही गई है, इस चीजों से मेल नहीं खाता है. परंतु और लोग कंफ्यूज होके अपना निष्कर्ष भी उस प्रकार से निकाल लेते हैं. परंतु यदि आपको उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इफ यू नो द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज पर्टिकुलर वर्ड्स, then you will not be misguided, right? You will be addressing it the problem rightly to the right person, right? This happens in many of the times when we go in Sanskrit shlokas. So shloka 18, Krishna is speaking about again impermanence of the soul and comparing it with the he is comparing the impermanence of the body and comparing it with the soul, right? Permanence is soul and impermanence is body. So he's describing about the impermanence of the body and then coming back to the qualities of the soul. So last shloka I spoke about the eternality of shlok, and we understood that many materialistic persons also mistakenly take this on the bodily level of understanding, and they refer this jivatma and they as the eternal, impersonal, eternal. When the presence of the deha is spread throughout the body, they take it as impersonal, like how the air is present throughout the world, like that way this soul is present throughout the body. But again, to reaffirm you that that same Avinashi and all those were used on that, so we don't go back to any kind of confusion. So we are very clear that whatever is to be understood within the ambit of what has been spoken, because Krishna will not go off somewhere and come off to the topic. So today also, technically, many people misread this shloka with the slightest twist, what they understand. So that we have to be very careful. So what exactly Krishna is saying here? So let us understand, in terms of grammatical only, because as I said, grammar sometimes it gives many meanings. So what Krishna is using here in the first letter, in Antavanta ime deha. Deha is what? So deha is what? And deha is what? Material world. Deha, In this context, is body. yeah, these bodies, yeah. That's what I'm telling grammatical now. I'm telling deha is grammatical. What do you say? One body. Singular and plural. Deha is what? Plural. Plural. These bodies. So if you read the translation, you will get that. But very minutely we forget that. You read the translation, what it says meaning? These bodies, right? Okay. Ime deha. He is speaking about देहा नहीं लिखा हाँ ठीक है, वो संस्कृत की कभी कभी जानकारी में होता है, लेकिन अभी होता है तो मैं बता रहा हूँ. अब तो ना भाई कौन बोल रहे थे, हम हैदराबाद में तो बोलते हैं हमारे बाल टूट गए, हमारे बाला टूट गए.
और कहीं यूज नहीं होता है, बट हैदराबाद में तो होता है बहुत। हमारे बाला टूट गए। अभी माता जी याद कर रही थी, मेरे को याद आया, बोला अच्छा एग्जाम्पल है। एक माता जी याद कर रही थी, ऐसा बोले मेरी बाला टूट गए, बोला सही बात है, उसी को याद लेके आएंगे। कभी कभी किस चीज को कृष्णा से कनेक्ट कर सकते हैं हमको ऐसा पता नहीं चलता है। तो किसी ने मेरे से ऐसे डिस्क्रिप्शन में बोला था कि भाई हैदराबादी लोग थोड़ा हर चीज में आ लगा देते हैं, तो इट इज बिकम्स प्लूरल, नॉट नेसेसरी इन हिंदी दैट बिकम्स प्लूरल। By just adding a, it becomes plural in Hyderabad. It happens because it is the culture which has come in there, है ना। बाता कर रहे हैं ना, क्या बात कर रहे हैं सिंगर, क्या बाता कर रहे हैं। तो so similarly, deha here is plural in Sanskrit also. Okay, and the next word itself, sharirina, how that is used? That is used in singular tense. Sharirina, what did he write? The meaning, translation, Prabhupada? Occupier of the body, right? He did not write bodies. Huh? What is it, right? देहधारी जीव का, हाँ, देहधारी जीव का, हाँ, आत्मा के लिए। तो शरीरिणा देहधारी जीव के लिए। तो ये कैसे कैसे यूज किया? सिंगुलर टेंस में यूज किया, है ना। सो ऑक्यूपाई ऑफ द बॉडी सिंगुलर टेंस में, और देहा प्लूरल सेंस में यूज किया। ओके, नाउ थिंक एंड अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट? क्या समझते हो आप लोग? जरा बोलिए, बोलिए। इसमें कुछ ऐसा ये नहीं है, कोई इसमें ग्रामर ही है, जो समझ में आया वही है बात। He is referring to all the bodies present in there. Okay, that is one point. He is referring to all the bodies which is present in the Yuddha Maidan. Okay. And Sharir, okay, that is for the bodies. Okay, you are telling. Okay, fine. Next. एक आत्मा सारे शरीरों में। एक आत्मा सारी शरीरों में है। ओके, ये एक पॉइंट है, बहुत जरूरी है पॉइंट, इसलिए मैं पुष्पाने लगवा रहा हूँ, क्योंकि जो लॉजिक्स आप लोग समझते हो उसके हिसाब से बाहर आना है सबका। हाँ, यस। फिर उसके बाद में सबको, मैं जो भगवत गीता का एक्चुअल लॉजिक है उसके हिसाब से मैं सबको आपको ये करूंगा। जितने शरीरधारी है, हाँ, जितने जीव है वहाँ पे, उन सबके लिए बोला जा रहा है कि वो अविनाशी है, मतलब ठीक है, बिल्कुल। वही माता जी ने भी वही बोला, आप भी वही बोल रहे हो कि सारे जितने जीव है सारे उनके शरीर के लिए प्लूरल यूज किया। मैं यहाँ ग्रामेटिकल पूछ रहा हूँ प्रभु, बिकॉज यही समझना बहुत जरूरी है। सारे शरीरों के लिए ग्रामर यूज किया है कि प्लूरल। ओके, इन और ये मीन्स लाइक वो ऐसा मीनिंग आता है कि सारे शरीरों के लिए। ठीक है, वन ऑफ द मीनिंग मैं आपको बोल रहा हूँ, सही है, ठीक है। और कुछ नहीं? एनीबडी एल्स गेस कर सकते हैं? जरूरी नहीं है प्रभु कि हर एक चीज का प्लूरल क्या बोलते हैं, एस लगा के होता है। नहीं नहीं, वो तो है ही प्रभु। वो मतलब नहीं नहीं, वो तो है। आत्मा का प्लूरल भी आत्मा भी हो सकता है, मतलब इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि या नहीं, सारे वही तो अभी प्रभु ने क्या बोला कि भाई सारे शरीरों में एक ही आत्मा है। ओके, आत्मा हैज बीन सेंट इन सिंगुलर। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट्स नॉट एन इश्यू। ओके, एम्फसाइज कर रहा है आत्मा को, जैसे बॉडी को उसने कहा सारे शरीरों, आत्मा को पर्टिकुलर एम्फसाइज किया ये एक है। कैन नॉट बी चेंज ओनली वन। आत्मा पे ज्यादा नहीं नहीं, प्रभु का पॉइंट कुछ अलग था, आपका पॉइंट अभी कुछ अलग आ रहा है। प्रभु का पॉइंट था कि भी सारे शरीरों की आत्मा एक है। आपका पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये कि इस शरीर को ऐसे डिफरेंशिएट किया है कि मतलब उतना फोकस नहीं है कि सारे शरीर हाँ, चेंज हो सकते, लाइक लाइक सारी बॉडी में डिफरेंस होते हैं, लेकिन आत्मा एक है सबकी। वो सबकी आत्मा एक ही है, एक ही। सबकी आत्मा एक ही है। हाँ। आप भी वही बोल रहे हो, ठीक है। ओके, और एनीथिंग एल्स मैम, इफ यू हैव रेड? नो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस grammar that he has used plural for telling the representing the bodies, and Krishna has used singular for representing the atma. Okay, that one soul gets transferred to multiple bodies. That's also one of the point. Yes, that's also one point, which is also correct, right? Okay, so now we'll come to the discussion. Okay, so most of the points have come out. So materialistic people get a chance here that there is one soul and many bodies. Okay, those who are materialistic people get a chance that there is one soul and very many bodies. The one Atma which is formless occupies all bodies. Is this correct when I say? If he is not liberated and connected to the Lord, Hmm. not self-realized, then he definitely takes another birth and goes to another body. Yeah, that is the ultimate meaning. Yes, correct. That's okay. Now, when I say the Atma, the formless, the soul is formless, example, because and it is present in all the bodies.
मतलब कभी कभी यही पॉइंट आता है ना डिस्क्रिप्शन. सो इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट? नो. प्रभु बोलते हैं नो. आप क्या बोलते हो? हाँ. पीछे वाला भी हम उसी कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो यस यस चल रहा है. Okay. So just recollect, what did I say in the last shloka which nobody recollected and said me in the point? Nobody can destroy it. Yeah, okay, but what did I say about Atma? When I said about Atma, I said one particular point. Nobody remembered, I think so. Atma is नित्य. Nitya, ठीक है. I said one particular quality. हाँ? Vishnu. हाँ, so that's what coming to near about Vishnu Tattva. So Atma is, people should not make the mistake of understanding this Atma as the Vishnu Tattva. पिछले श्लोक में प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली लिखा था, वी आर डिस्टिंक्ट. हम लोग, हाँ, परमात्मा से आप मिक्स मत करो. हम अलग जीव आत्मा है. वी आर यूनिकली डिफरेंट. वर्ड यूज किया था मैंने, यूनिक है आप, है ना. ये वर्ड उसके रेफरेंस में यूज किया था. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंटर इन द लास्ट श्लोक टू रिमेंबर दैट एवरी आत्मा इज यूनिक इन नेचर. ओके. पर्सनलाइज सोल, मैंने ये भी बोला था ना आपको, पर्सनलाइज सोल भी बोला था. में लिखा है पर गीता जी में के श्लोक में नहीं आया अभी तक. हाँ. कहीं नहीं मिला. है ना? आपकी ट्रांसलेशन में आया बिल्कुल. हाँ, यही मैं बता रहा हूँ. श्लोक में अभी तक कहीं नहीं क्या आया. गीता के श्लोक में ऐसा हर चीज वो प्रभु तो पूरा मैं कह रहा हूँ, सेकंड चैप्टर में समरी बोल देंगे. हम समरी समझ ही नहीं पाएंगे कभी भी. समझने के लिए ये सब डिस्कशन प्रभु. ठीक है. तो द सोल इज यूनिक एंड पर्सनलाइज्ड, आई सेड, है ना, पर्सनलाइज्ड. ओके. सो यूनिक एंड सिमिलर कैन नॉट बी डुप्लीकेट, राइट? Yeah, unique and personalized soul cannot be duplicate, right? Cannot be a duplicate, right? When I say unique का मतलब क्या होता है? Unique, that is, you cannot have somebody like this, right? Go to shloka 22. And what in 22 Krishna is saying? Krishna is comparing, like, you know, that shloka which comes, you know, changing bodies, change, है ना? हाँ. उसके अंदर आप ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो क्या पढ़ता है? त्याग कर नए वस्त्र धारण करना. हाँ. उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है. ठीक है. हम उसके और बाद में डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे कभी, लेकिन अभी उसमें क्या समझ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसमें, कि जैसा एक शरीर छोड़कर, जैसा व्यक्ति कपड़ा बदलता है डेली अपने शरीर का, हाँ, तो आत्मा को, आत्मा को किससे कंपेयर कर रहे हैं? कपड़े बदलने के इससे कंपेयर कर रहे हैं. तो अर्थात क्या है कि आप आज अभी एक कपड़े पहने हो, इसको बदलना है तो ये कपड़े उतार के दूसरे बदलने पड़ेंगे, है ना. अब ये मत बोल देना भाई मुझे फ्लाइट पकड़ना है तो मैं 10 शर्ट एक के ऊपर एक पहन के चला गया, वजन कम करना हैंड लगेज में, है ना. हैंड बैगेज का लगेज लगेज करना है तो भाई स्वेटर 5 शर्ट पहन लिए, उसके ऊपर स्वेटर पहन लिए. प्रभु एयरलाइन में समझते हैं 6-7 किलो का यदि अलाउड है आपको. तो मैं यही कह रहा हूं कि लाइक, यू नो, आत्मा को वस्त्र मीन्स लाइक शरीर के लिए वस्त्र चेंज करना होगा, तो ये उतारने होंगे और दूसरे लेने होंगे. ठीक है. सो इसका मीनिंग क्या निकलता है कि शरीर, तो वैसे ही आत्मा का वस्त्र क्या है? यह शरीर, है ना. यह शरीर उतरेगा तभी दूसरा शरीर मिलेगा, है ना. ये शरीर खत्म होगा तब दूसरा शरीर मिलेगा, राइट? When you lose this body, then only you will get the new body, right? So, because when we have to change the dress, we just remove the shirt. So, you know, we don't change the body. Similarly, the Atma changes the body. So, at given point of time, the Atma can have only one dress. Atma can have only one dress. So, if Atma can have only one dress, then how is it that Atma is having so many dresses? There itself you will get dismantled. डिफरेंट से लेते हैं. आपने जैसे असल में सवाल यहाँ पे आ रहा है कि आप कहते हैं आत्मा ट्रांसफर होती है, दूसरे कहते आप कहते हैं आत्मा, तो ये शरीर उतार के दूसरे में ट्रांसफर होगी ना. आप कहते हैं आत्मा ट्रांसफर होती है. दूसरा वो कहते हैं कि उनको शरीर मिलते हैं.
आत्मा वहीं पे होती है, आत्मा जहाँ पे है वहीं पे रहती है, उसके पास शरीर आते हैं। जैसे आप कपड़े बदलते हो तो आपके शरीर में कोई चेंजेस नहीं आती, सिर्फ आपकी जो अपर बॉडी वो चेंज होती है। आप जो थे जो हैं वैसे ही रहते हैं, बराबर। सिर्फ बॉडी चेंज होती है। हम्म। तो आप उधर ही हैं, कपड़े आपके पास आ रहे हैं। या वैसे ही आपकी तो ये डिफरेंस कहाँ? सोल भी वही है और अलग अलग कपड़े आ रहे हैं, पहन रहे हैं आप। कभी आप मनुष्य का शरीर मिल रहा है, कभी आपको, सेम है ना, चेंज नहीं हो रहे ना, तो अपन हाँ, ही हैं। आप नहीं चेंज हो रहे। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो वही जैसे शरीर चेंज नहीं होता है, वैसे आत्मा चेंज नहीं हो रही है, लेकिन आत्मा का कपड़ा जो ये शरीर है वो चेंज होते रह रहा। ठीक है। सो द थियरी ऑफ वन सोल प्रेजेंट इन ऑल बॉडीज एक्चुअली डज नॉट फिट हियर. Maybe it is a part and parcel of the Supreme Soul, and that's why it's mentioned here. Yeah, we are part and parcel. There are many. Like in the last slokas only you will get it that, what did Krishna say? Like, there are many jivas, part and parcels of the Supreme Lord. There are many. Asankhya means there's no number. Means we can say there are many. So we all are comes in that many only. So, and we all many are unique. The unique is Supreme Soul, Paramatma. जो ठीक है, तो एक समय पर जीवात्मा एक ही शरीर धारण कर सकेगा. ओके. द so Krishna is saying this bodies are, that is the reason why Krishna is saying these bodies are temporary, destroyable and bound to be destroyed or to be destroyed, using the plural sense in body. Actually, the word plural used for bodies also represents what Krishna is saying, that not only this body, your all other bodies have also been deformed or has already been destroyed. तुम्हारे कई शरीर मिले हैं तुमको, वो सारे खत्म हो गए और ये शरीर भी चला जाएगा. ये शरीर भी आपका उसी हिसाब से चला जाएगा. You have possessed so many bodies before and all those bodies have been destroyed, right? And this body also will get destroyed. You are eternal, but your bodies will get destroyed. Already he said in 2.212 that you are Sanatana, eternal. You will get one more body once this body is destroyed, okay, or it is done. You will get another body. Other body may be a spiritual body or a normal body. It depends. Or a dog body or a cat body or a whatever body, but you will get a body. So Antavanta, by hook or crook, all these bodies will be destroyed. So all old bodies also have got destroyed, and this current body also will get destroyed. There is no doubt about it. That is the reason. Contrary, if Krishna would have used ime deha, then one could have said the soul has got the body now, which means that he before had not had a body, and in future also is not going to have a body. The concept of we stay in this part of the world, the concept here is what? एक ही बार जन्म है, उसके बाद हमें once we die we go to Jannat, right? Or Swarga. This is only the body. They don't believe in rebirth, right? They don't believe in rebirth. But whereas Bhagavad Gita clearly gives you that once you have left the body, you will get a body. You will get either material body or a spiritual body. That is not known. That depends on your deeds. What deeds you do, so you reap, right? So Krishna, क्या बोल रहे प्रभु? अच्छा, ठीक है. So to understand, Krishna has thoughtfully said here Deha, which hints on the topic of this reincarnation, right? In 2.12 also he gave that you are eternal, and you will get a new body. But here he says all your past bodies have been destroyed and this body also will get destroyed. Okay? In past he said आप eternal हो, आपको नई body मिलेगी. और यहाँ पे he is clearly saying you that antavanta ime deha, this bodies whatever you get, they will get destroyed. They have been destroyed in past also, and they will also be destroyed in the future also. All the materialistic body whatever you get will get destroyed. Right. So happened with our grandfather. Yeah, that's what. So many of the times what happens, other faiths, if they don't accept, like other faiths, if they don't accept this, like, okay, we leave this body and we straight away go to Jannat. That means what, either you are very
strong in that, I will get Jannat only. But one cannot say. It is all depends. Bhagavad Gita says that very clearly. At the end, the moment, what is your consciousness? That consciousness will take you to the next birth. That consciousness will take you to the next birth. So, and it gives a foolproof solution also. That, if you don't want the next birth to be a human being, what you have to do, right? So that, you can automatically get a solution from this birth and death aspects of this body. The body is taking birth and dying, right? And the soul is getting caged into it. So indirectly, you are taking birth and dying, and you are getting different bodies. So all these bodies are going to die. So he is giving instructions to Arjuna, not as an ordinary person. Not as an ordinary person. He is not telling all this, that all these bodies have been destroyed and this body will also be destroyed. He is not telling this simply or whimsically. He is saying this as Supreme Lord, Bhagavan. What did we start when Krishna starts speaking? What did we reach? Bhagavan Vacha. है ना? ये बात है. तो as a Bhagavan he is telling. Okay. So for Krishna, the time element doesn't apply. The past, present and future, right? You can open 4.1. 4.1, 2, 3 will read translations. His vision is not restricted. पढ़ो इंग्लिश पढ़ो फर्स्ट 4.1. Personality of 4.1 Bhagavad Gita. The personality of Godhead, Lord Sri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind, and the Manu in turn instructed to Ikshvaku. Okay. Ishwaku. Yeah. Next. 4.2. 4.2 पढ़ो कोई और. So there he is saying that, this knowledge I am not giving to you is not the old, not the new knowledge. I have gave it to sun god. Okay. And Krishna was how much of age when this Mahabharata war was happening? No. 25 तो जब वो गए तब यहाँ से 85 years के थे वो. He was 85 years when this war was happening in Kurukshetra. So at the 85, he is telling that, I gave this knowledge to Vivaswan. So Krishna's birth time also Vivaswan was there. Vivaswan is Surya. So sun was present at the time of Krishna's birth also. Then how did he give it to Surya? Arjuna asked questions in 4.2. 4.4, sorry. 4.4 पढ़ो, not 2. 4.4 पढ़ो. भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं. मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता. Confidently. You and I have taken so many births, but I remember all the births. You will never be able to remember the births. तुम्हें कोई भी चीज का स्मरण नहीं रह सकता. शुक्र करो नहीं है. यदि स्मरण होता हमको पता चलता कि हम सऊदी के किंग थे तो क्या होता. तो हमें स्मरण नहीं रह सकता. ओके. और 5 में क्या कहते हैं? 4.5 में personality of Godhead said many births both you and I have passed. Okay. I can remember all of 4 में Arjuna asked the question. Arjuna asked the question in 4. Okay. Godson Vivaswan. ठीक है. He asked the question, right? He asked the question, how Krishna that you are just 85 equivalent to me, or maybe some equivalent to my age, how did you give it to Surya? Then he says, oh, you don't think that you and I are on the same platform. I remember all the activities of all the births. तुमने मेरे लिए आज के दिन क्या ऑफर किया था, ये माता जी ने मेरे लिए क्या खाना बनाया था, उन्होंने मेरे लिए क्या बनाया था, उनको पूरा याद है. हमको आज के 2 हफ्ते पहले मैंने क्या बनाया था याद नहीं रहेगा. So he is saying all this knowledge in the form of that Bhagavan. So he knows that you have got so many bodies and all those bodies have been destroyed. Uktva. 2.6 में भी. हाँ ठीक है, वो बहुत है. उक्तवा means one who is said, right? कहे जाते हैं, said.
So who is saying this all this? Tattvadarshi. Again, we go back as who has heard all this? Tattvadarshi, Guru, Sadhu, and Shastra. So for us, it is to remember now. Our tendency is we forget. Krishna himself is saying that you will never remember all the jalmas. Even leave about all the jalmas. Ye chalu kar do, Prabhu. हाँ. Leave about all the janmas. We don't remember in this janma also. So for us, what is the solution? That is why it has been said. Just Shravanam, Kirtanam, and Vishnu Smarana. These three you have to do every time. Shravanam means listening. Kirtanam means singing or saying about Krishna. Because mundane subjects we say many things. And Smaranam, remembering him. That is why these things are always prescribed for us. You know, as a bhakti. How we can do listening, how we can. Like Kirtan, if you are singing, But if I. we all listen. And then when we all sing, you listen. Thus is Kirtana, Shranam. And what are we singing? We are remembering Krishna. Or chanting also. That is, means right now I gave the example. Abhi ek khud Kirtan kar rahe the na, we to. So Kirtanam that way. Or chanting. We ourselves say by our mouth. What we do every week chanting, right? So we say the same shloka by our mouth and we listen. So the saying is Kirtanam. Listening is Shravanam. So Shravanam is more important. And while saying and doing this, what are we remembering? Krishna. Okay. So ये इसीलिए तीन चीज बहुत important है. People, you know, sometimes get astonishment about this. है ना, जैसे शमशान जाते हैं तब क्या वैराग्य बोलते हैं प्रभु? फल्गु वैराग्य क्या बोलते हैं? श्मशान वैराग्य. स्मशान वैराग्य. We are taking Ram Naam Satya body को लेके जा रहे हैं. We are taking the body to the crematorium, but we are taking the body to the crematorium thinking that, you know, this person is suffered. Oh, actually सबको जाना है, सब कुछ है. जैसे ही बाहर आते हैं, मेरा वो सौदा हुआ क्या, ये हुआ क्या, and again he get backs. So उसको जो वैराग्य होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है. Only to that extent of जहाँ पे शमशान में. Once he comes out again, he comes back to the consciousness of his body. So they get, you know, astonished, thinking that, you know, oh, he might have died. For me, death will not come now. आश्चर्य करते हैं. यही सेम चीज पांडवों के साथ में हुआ था. पांडवों का यक्ष के साथ में आप लोगों को कथा पता है ना? Everybody knows? हाँ, यक्ष युधिष्ठिर संवाद, वेयर सभी लोग पांडव मर जाते हैं पानी पी के. ओके, मर जाते हैं इन द सेंस वो भी एक लीला है. बट देन युधिष्ठिर आते हैं, तो युधिष्ठिर के साथ संवाद में एक प्रश्न करते हैं यक्ष महाराज. क्या करते हैं? मैं तो बॉडी और सोल की बात कर रहा हूँ. युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि लाइक है ना, एक श्लोक बोलते हैं वो, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्तिह यमलायम शेषेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम. सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है पूछते हैं. ये बड़ा श्लोक है. युधिष्ठिर सेज डेथ. Yudhishthir says the answer as death, right? So he says everyday people are dying, you know, like everyday people are dying, traveling to Yamaloka. Ahani ahani bhutani gachanti Yamalayam. Yamalayam means Yam ke alay mein, means going to Yama's place. Yama is the god personified of death. So we go to him. The souls all go to him first. So many people are dying. ahani ahani bhutani. कितने ही लोग मर रहे हैं और सभी लोग यमलोक का ट्रैवल भी कर रहे हैं. शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम एत परम. बट जो यहाँ पे बचे हैं, शेष स्थावरम इच्छन्ति, जो शेष यहाँ इस जगत में बैठे हैं, वो सोचते हैं इसमें आश्चर्य की क्या बात है ना. लाइक हम तो अभी मरने वाले हैं नहीं. ठीक है, वो मर गया, लेकिन हम तो अभी मरने वाले हैं नहीं. तो ये आश्चर्य है. वो लोग हैप्पी बर्थडे बना रहे हैं. हैप्पी बर्थडे, अभी वो भी बोलने वाला था. अब जैसे ताजमहल बनाया, अनेक अनेक ऐसे चीज बनाए हैं, तो ये सब क्या है? ये आश्चर्य है ना. 7 आश्चर्यों में आते हैं, अजूबों में आते हैं, 7 आश्चर्यों में आते हैं, 7 वंडर्स. आश्चर्य प्रकट करते हैं कि भी इसके जैसा कंस्ट्रक्शन कभी हुआ नहीं आज तक. वैसे ही हम लोग, हमारा बॉडी हमको मिला है, उसका बर्थडे मनाते हैं. ठीक है. बर्थडे का मतलब क्या है एक्चुअली? Now we all celebrate birthdays. That doesn't mean that we should not. We should. बर्थडे का मतलब क्या है? हम डेली मृत्यु के
करीब जा रहे हैं, 1 साल हमारा जीवन का कम हो रहा है, मृत्यु के करीब जा रहे हैं. ओके, दैट्स व्हाई आप देखोगे people here in Islam, they don't celebrate birthdays. They say everything will go and celebrate in the Jannah. But we celebrate, right? But how do we celebrate? Cutting cake. Cutting cake, blowing the candle, whatever you want to do, you will do, right? Whereas the meaning of that is your life of 1 year has come down and your death is nearing you, right? But we don't want to remember about that. That is Ascharya. We don't want to remember about that. That is Ascharya. That is astonishment. But we do celebrate. How do we say? We say Krishna in the center. Hare Krishna to you. Hare Rama to you. That's only the reason. We in fact say 2-3 more lines which we don't sing here. Because people has to come to that Krishna consciousness. May you never take birth again. We say that. है ना? But हम लोग, मैं और शुभांगी ने बोला कि यहाँ पे थोड़ा नहीं गाते हम ये. कि कभी-कभी लोगों को अभी तत्व समझ में नहीं आया. What are we talking about? May you never take birth again. आपके सोल के लिए बोल रहे हैं. Like, you don't take this material body. You go back to your original body, which is Vaikuntha. Okay. तो आप may you never take birth again. अब हम ये लाइन बोलते ही नहीं है, हरे कृष्णा टू यू, हरे रामा टू यू करके, may कृष्णा bless you, may Rama bless you, and that finish. So keep Krishna in the center. तो ना, so that's the reason हमने जब केक कटिंग होता है बच्चों का, we do it in front of Krishna so that they are also blessed with that Krishna's thing. So Krishna here is saying bodies are bound to destroy. That does not mean he is demotivating you. Is he demotivating you? So what do you get? क्या कर रहे हैं फिर वो? I have written some notes. Disha Nirdesh. He is guiding you. He is giving you guidance. Disha Nirdesh. And what is that Disha Nirdesh? Forget the past. Whatever you might be doing, come to the position reality right now and accept spirituality gracefully. Accept spirituality gracefully. हम बोलते हैं ना, अभी बहुत लेट हो गया. कुछ लेट नहीं हुआ है. जिस दिन याद आया उसी दिन स्पिरिचुअलिटी शुरू कर देने का है. वहीं से भगवान को धन्यवाद देने का है. हाँ, so how do you get spiritual? Okay, when you are reading Bhagavad Gita, you are getting spiritual, right? You are understanding about spiritual topics. You read all mundane books, you will get all Kashmala in your mind. Kashmala. कूड़ा करकट. इदम कश्मलम इदम, जो भगवान बोलते हैं. ठीक है. अब हमने ये देहा के बारे में समझा. ओके, so you got the point about deha. And now we come to for the soul. He has used 3 words. What are those 3 words today? Aprameya, Anashi और Nitya. Right? Nitya, Anashi and Aprameya. So Nitya is what you all understand. जो eternal permanent बना रहे. So आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है. So you can create any circumstances and maintain the body, but you will never become immortal, right? मैं बहुत एक्सरसाइज करूंगा, मैं बेस्ट से बेस्ट चीजें खाऊंगा. माइकल जैक्सन ने तो हर साल अपना ब्लड बदलवा लिया था ताकि मैं कभी मरूं ही नहीं. Michael Jackson did that, no? He used to change his blood so that he should not die. His point was that only I should never die. His doctors used to be always around, but somehow the other, his death had also come. उसका डेथ पता है ना आपका? हाँ, मालूम. Now also there is one billionaire. He is taking blood to. Yeah. That's what many people in US do that. उनके पास पैसा है. They think that changing blood will give them longevity. Okay. उसको कोकेन बंद करना चाहिए था. उसने उधर हुआ. So Jivatma is eternal and bodies are non-eternal. So you have to understand with that as concept of Nitya. And then it is Anashi. Anashi is one which cannot be destroyed. So नाश नहीं होने वाला. So you create any kind of situations नाश करने वाला. But इसीलिए कृष्ण ने ये वर्ड यूज किया था अनाशी. अब तुम सोचते हो कि भाई मैं ऐसा सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करूंगा कि ये बॉडी खत्म हो जाए. जैसे गला दूंगा इस बॉडी को, आग के पास जाऊंगा और गला दूंगा इस बॉडी को. हाँ,
या फिर मैं कुछ खाऊंगा नहीं और स्टार्व कर जाऊंगा डेथ को। ओके, इसलिए अनाशी बोल रहे कि भाई तू जो करेगा वो सारे बॉडी के लिए होगा, परंतु ये सोल तो अनाशी है, उसका कोई ऐसा नाश होने वाला नहीं है, तू कुछ भी कोशिश करके देख ले। इसके पिछले श्लोक में ऑलरेडी बोला था, न कर तुम अर्हति, यू कैन नॉट किल द सोल। और यहाँ पे इवन इफ यू थिंक ऑफ इट by fasting, I'll be fast to death, then he's saying it is anashi, you cannot do that also. Only you will be vacating the body and you will get one more body. So Krishna is using the word anashi here for that thing only. Okay, so then it is aprameya. Aprameya cannot measure. अब आप बोलो, पिछले श्लोक से विरोधाभास है नहीं है? हाँ तभी मैंने पूछा था सवाल आपको। हाँ पता है मेरे को। पिछले श्लोक में तो साइज ऑफ द सोल हैज बीन डिफाइंड 1/10,000, so that's a measurement, right? And today Krishna is saying immeasurable. How do you understand this? ये विरोधाभास इसलिए बहुत जरूरी समझना। So that doesn't mean that Krishna is going back on his words. No. He is like when he gave 1/10,000 tip of the hair, he gave the size. Now, for us also, now you take whether it's an African hair, whether it's an Asian hair, or it's an Caucasian hair. The size of the hair, how much is the circumference, diameter, male, ठीक है। और उसका 1/1000 part कितना काटना है, इतना काटना है, इतना काटना है। The measure or the method of that measurement has not been given. It has been given to indicate that smaller is the soul. In that sense, it is immeasurable. That you do not have gadgets today to measure that kind of soul. आप कह रहे हैं कि 1000 times smaller 1/10,000 part of the tip of the hair. बाल को 10,000 भागों में डिवाइड कर लो, फिर आप देख सकते हो उस बाल को। देखने की बात नहीं कर रहे हैं हाँ, यहाँ पे। और उसको मेजर कैसे करोगे? That's the point. ओके, हाँ। कैसे करो? ये पॉइंट है। वही है। Immeasurable का मतलब भी वही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई साइज इज सो स्मॉल। अच्छा, इमेजरेबल किसको बोलते हैं बताओ? हाँ, इमेजरेबल किसको बोलते हैं? यहाँ पे कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है हाँ। जिससे आप उसको मेजर करो। ये Yes, आप देख नहीं exactly. सकते, तो इसको हम Exactly. जरासीम को भी दे सकते हैं। दामोदर याद इमेजरेबल उसको, हाँ, इंस्ट्रूमेंट कोई भी ऐसा नहीं जिससे उसको आप मेजर कर सकते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली फाइन है ना, ठीक है। तो साइज है परंतु हम मेजर नहीं कर सकते। दैट इज करेक्ट। सो इन दैट सेंस यू हैव टू टेक दिस एज इमेजरेबल, नॉट एज विरोधाभास। ओके, तो लाइक आई वाज सेइंग व्हाट कि ये आपने इमेजरेबल किस लिए यूज करते हैं? या तो बहुत बड़ा है ना, या बहुत ही छोटा है, इनफिनिटेसिमल जो बोलते हैं, बहुत ही छोटा है, उसको मेजर करना इम्पॉसिबल। तो कृष्णा को मेजर करने चली थी यशोदा मैया दामोदर में, रस्सी बांध पाई थी? वो तो भगवान ने अपनी लीला दिखाई तब जाके वो बंधे ना। सो you cannot, and he came as a small child as Vamana, and when he took his swarupa, he measured the entire Brahmand up to the Brahmaloka. So how can you measure such a person who is immeasurable? Okay, so वैसे ही we, and I said he is already present as a super soul, and the super soul size is size of the pore, size of the pore of your thumb hair, something, and the size of the soul is 1/10,000 part of it. So it is very difficult to measure all such things. That is why it is said aprameyasya. So you cannot measure it in terms of normal gadgets or whatever it is. You don't have such things where you can measure such kind of small quantities, and that is why he is telling Tasmat Yudhyasva Bharata. Come on, Arjuna, get up and fight. All these bodies which you are thinking are anyway going to be died. Okay, so they are anyway going to be destroyed. So you don't have to worry about that. Making into your karuna, making into your compassion as your this thing. So as a Kshatriya, you have to get up and fight. That's your work. That's why Srila Prabhupada is writing. क्या हिंदी पढ़ूं इंग्लिश में पढ़ूं? The minute particle of the whole spirit acquires this material body according to his work.
The minute particle of the whole spirit acquires this body according to his work, and therefore observance of religious principles should be utilized. In the Vedanta Sutras, the living entity is qualified as light because he is part and parcel of the supreme light. As sunlight maintains the entire universe, so the light of the soul maintains the body. So, as soon as the spirit soul is out of the material body, the body begins to decompose. Therefore, it is the spirit soul which maintains this body. That has to conclude. It is only because of the spirit soul that this body is being maintained. The body itself is unimportant. He goes again ahead and says, the body itself is unimportant. बॉडी यदि ये खत्म हो गया तो दूसरी बॉडी मिल जाएगी, तो वो हमारे लिए जरूरी नहीं है. बट ये एक व्हीकल है, इस व्हीकल का सदुपयोग करके हमें इस जीवन को पार लगाना है. जन्म मृत्यु के चक्कर से बचने के लिए एक व्हीकल है, और इस व्हीकल से छूट गए तो फिर पता नहीं ये व्हीकल कब मिलेगा. दिस इज अ बॉडी इज not important. Srila Prabhupada has written. But that's a reason that means we cannot ignore it. But it is a vehicle through which we can cross over the oceans of nescience. We can cross over the ocean of nescience. So we have to maintain it for that purpose only, not for the purpose of show off. Not for the purpose of show off. So that is the reason we have to follow all our religious principles which are guided through the Bhagavad Gita and all those. So Arjuna was advised to fight because he is a Kshatriya. So what is his religious principle? Kshatriya has to fight. So that is the reason you have to maintain that. Advised to fight and not sacrifice for the cause of religion of material body consciousness. So bodily consciousness, thinking that, these are my fathers, sisters, or fathers and uncles or guru on bodily level. No, they are just bodies. And in the present stage, before coming to this present stage, we have given enough chance to everybody not to avoid war, but war was inevitable. So, and now you cannot go back from your duty. As a warrior, your duty is to fight. So come on, get up and fight, Arjuna. Hare Krishna. किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए. और कोई? हाँ, बॉडी तो जब जिस्म मरता है, हाँ, तो बॉडी पहले यानी आत्मा जाती है बाहर, हाँ, आप कह रहे जाती है, ठीक है, हाँ. मैं लेता हूँ. आत्मा बॉडी से निकलती तब मरता है, या बॉडी मरती है और आत्मा फिर जाती है? नहीं, पहले क्या होता है? आत्मा निकलते ही बॉडी मर जाती है. आत्मा निकलती है. आत्मा, अब सवाल ऐसे छोटा सा है कि आत्मा क्यों निकलती है, उसकी क्या रीजन होगी? कि ये बॉडी, अब एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी बॉडी को मीन्स लाइक ये चीज है ना कि एक तो बॉडी बदलने का समय आ गया है, तो परमात्मा अपने ऑलरेडी समय निर्धारित किया है, तो उस समय तो वैसे ही बॉडी को छोड़ के निकलना है. ओके, मतलब परमात्मा आत्मा को कहता है कि अब उसका टाइम हो गया, हाँ, बॉडी का मुझे निकलना है. यस, तो आत्मा से निकलना है, तो यस, तो सूक्ष्म बॉडियां उसके साथ निकलती है क्योंकि वो उसके पार्ट है. ओके. दूसरा एक चीज कभी अभी आप क्या बोलते हैं ना कि जैसे कभी कभी बॉडी को इतना बड़ा आघात लगता है कि आत्मा बर्दाश्त नहीं कर सकता है और वो बाहर आ जाता है. एक्सीडेंट हुआ फॉर एग्जांपल सडनली. ओके, आत्मा बर्दाश्त करने उसके बाद में टॉपिक. नहीं, एक बात बता रहा हूँ. नहीं, बहुत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ. कभी लंबा लेना है तो वो भी ले लेंगे. आत्मा जब कोई एक्सीडेंट होता है तो आत्मा एक सेकंड के लिए बाहर आ जाता है कि एकदम, अरे एकदम बड़ा जोल्ट हुआ है इसकी बॉडी के साथ में. तो अब हम देखते हैं कि अरे भाई ये तो कॉन्शियसनेस जा रहा है, उसको ये करते वो करते, तब उसकी बॉडी सेटल होती रहती है, तो वापस उसके अंदर उसी क्षण चले आता है और उसकी लाइफ वापस रिस्टोर हो जाती है. ओके. दो वर्ड में जो हैं, एक हुआ इटर्नल. इटर्नल का मतलब ये है कि हमेशा रहने वाला. यस, हमेशा रहने वाला. तो फिर अनडिस्ट्रक्टेबल का वर्ड यूज करने की लॉजिक समझ नहीं आई. इनडिस्ट्रक्टेबल, डिस्ट्रक्टेबल भी बोले कि डिस्ट्रक्टेबल नहीं है. हाँ, तो एक चीज आप कह रहे हो कि इटर्नल है, तो उसका मतलब वो चेंजलेस है. हाँ, यस, वो चेंजलेस है, तो ये आपके लिए बॉडी को समझाते हुए कह रहे हैं ना कि आप इस बॉडी को खत्म करने के हिसाब से सोचते हो कि मैं खाऊंगा नहीं और खत्म कर दूंगा अपने आप को. दैट इज नॉट पॉसिबल. आप इस बॉडी को ही खत्म कर पाओगे, सोल को नहीं कर पाओगे. इटर्नल आ गया ना. हाँ, तो इसीलिए इटर्नल वो नहीं समझते ना. बॉडी लेवल वालों को ही तो है समझाना. बॉडी लेवल वालों को ही तो समझाना है. What is the difference?
What is the difference between physical body and Sanatan Sharir? Sanatan Sharir is Satchidananda. And Get age, like, no, that is what it is. I think so. Last I shared that chart. No, so what is that? Sat, Chit, and Anand qualities you just read. So it is part and parcel of the Lord. So it is also Sanatan. It is it is also that same Satchidananda quality. But it is caged between this material quality of Bhumi, Rapo, Nalo, Vayur, Kammanur, Buddhi, Revacha. 8 products. It is. once if we get the Sanatan Sharir, it is not. We will not come back here. That is what Bhagavad Gita says. And that is where Prabhu's thing is coming. You tell me, how did we come here? Shuru hai. He can be falling. No, he will never fall back. If soul is attaining mukti, he will never fall back. If soul attains salvation into the Brahma Jyoti, there are chances of fallback. Bhagavad Gita doesn't say, other Shastras say. I am telling you from that answer. So that is also, the Brahma Jyoti is also Lord's eternal abode. It is just the outside periphery of the Lord abode. So, it's there also, since there is no activity, you do not know what to do the activity. So you may sometimes fall back into the material pool again. If you are used, because as a soul, we are always bound with activity. And if we do not get the activity in the Brahma Jyoti, we fall back. Unless we come to know, no, my point was to reach the Supreme Lord's abode, which is here nearby. And when you think, when you get that feeling, you will get the way. जैसे हमने कहा कि बॉडी बाल के 10,000 के शेप का है, तो उसका मतलब 10⁻⁴. हाँ 1/10,000. 1/10,000. हाँ 10,000वें भाग. 10,000 ना. हाँ 10,000. हाँ उसकी पावर -4, राइट? कितना मेरे को नहीं. माइनस 10,000 का एक पार्ट है. हाँ 10,000 एक पार्ट. 1/10,000 लेकर ना. हाँ 10⁻⁴ होगी ना बस. नहीं वो मेरे को नहीं आता फिजिक्स वगैरह. हरे कृष्णा. श्रीला प्रभुपाद की जय. मैं इसको एंड करता हूँ. क्वेश्चन मेरा है. या